Hello everyone, welcome for our interview here with Dr. Yashbala Tewani from Ajmer, who has done her FMGE from Georgia University, who just cleared her exam with 179 marks. First of all, from Team Cerebellum, I speak on all the faculty from there. A hearty congratulations on your milestone achievement. And of course, many more achievements to come for you, Dr. Yashbala. Thank you so much, sir. Thank you so much. Hello, sir. Good afternoon, good evening. And sir, I'm very glad that you have introduced me in a very good manner. Thank you. So here we have Dr. Yashbala. I have some things lined up to ask her, which will, I hope, help students who are going to prepare for their FMG entrances in the months and years to come take some vital piece of advice as how her journey was, because students have a lot of fear, or actually FMG exam में passing percentages भी इतनी नहीं होती. So hopefully she will throw some light for all students to benefit from her experiences. I hope you are ready, Dr. Yashbala. Yes, sir, sure. Okay, so we will start from the start. क्योंकि आपकी इतनी अच्छी result आई है, तो सबसे पहले please tell me, how do you feel as the feeling sunk in, and were you confident in your preparation जब आप exam दी थी? Sir, yeah, I would say that it was a very tough process, and I was not able to process it, that I would be able to clear it or not. I was not that confident because when I recalled, so I was like, कि अभी तो I'm at verge, maybe I won't pass, or that I was in that dilemma. But yeah, sir, when it came, there was a sigh of relief more than happiness. So yeah, sir, I was very relieved and happy as well. बढ़िया बढ़िया. तो एक्चुअली जो जिस दिन एग्जाम थी उसके बाद यशबाला हैड मैसेज मी सेइंग कि इतने मेरे हुए, आई एम नॉट श्योर, एंड मैंने उसे इतना ही बोला था, ट्रस्ट योरसेल्फ, एग्जाम हो गई, अब ज्यादा मत सोचो. Yeah, so before we go to the nitty-gritties of the exam, I will ask you something which not many people know, and definitely FMG students can relate to it, that how was your journey of your 6 years of MBBS in Georgia? वहां पर आपको कितना पढ़ाते थे, and how much does it really help you prepare for the entrance? Yeah, sir. Sir, so I would say that academically, my journey was smooth because I had very good friends. So we used to study in groups and we had group discussions. Like for personally, it was very good. But if we say about the college or academically, if you're asking us for the teachers, it was okay. I mean, there was strictness, but not that strict. So yeah, we used to study for the college exams and then we used to give it, and then it used to happen that way, likewise. So do you feel agar aapne in those 6 years, if you have studied well, it gives you added benefit to appear for the entrance? Sure, sir, sure. I believe that if someone has studied, like average student, if there is some average student in the college, he or she can clear the exam with a good score if they have studied for 6 years, because yeah. Or normally after you finish your FMG and when you're preparing for the entrance, तो आपको कितना time लगता है to prepare? How much time did you get, and how much do you feel is really needed to appear for the entrance and clear it safely? Sir, I believe, like, if you're asking me for solely for FMG exam, and then if you have if you have studied well enough, like for 6 years, then 6 months are more than enough. People can clear it. There is syllabus which is, I believe that, okay, fine, that is difficult, and the exam these days are also getting more difficult. But if you have prepared for 6 years in the college and if you have studied, then you can clear this exam. और अगर मैंने 6 years इतनी पढ़ाई नहीं करी है, मैंने ज़्यादा मस्ती करी है, because I have gone away from home for the first time, और मुझे सीधा FMG की एंट्रेंस क्लियर करनी है, तो भी 6 months इनफ होने चाहिए या फिर मुझे ज्यादा टाइम लगेगा? सर 6 months फिर आपके सर बेसिक्स पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मस्ती तो सर हमने भी करी थी, पर ये था कि या वी स्टडीड आल्सो. सो सर इट डिपेंड्स दैट हाउ यू स्टडी वेल इन दीज 6 months, हाउ यू यूटिलाइज दीज 6 months. इफ यू आर वेरी मच कंसंट्रेटेड, लाइक आई डीएक्टिवेटेड माय इंस्टाग्राम, आई डिडंट यूज व्हाट्सएप, आई जस्ट कंप्लीटली, मैं बिल्कुल सोशली इनएक्टिव ही हो गई थी. देन आई थॉट कि अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा. आई वाज वेरी एक्टिव सोशली अदरवाइज, बट yes sir, but in these 6 months, 5-6 months, I was inactive. I deactivated every other place. So sir, yeah, you can secure good score. Okay, you can pass the exam. So now coming to the important part, how was your preparation journey abhi ki last 4-5 months ki of exam preparation particularly? आपने
क्या यूज करा, आप कैसे पढ़ते थे? जैसे कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़नी हो, देन हाउ वुड यू गो अबाउट इट रियलिस्टिकली, जो कोई स्टूडेंट फॉलो भी कर सके? Sir, for this FMG, sir, I relied completely on Cerebellum Mission 200 plus videos. I studied it from the live recorded classes, which राइट। used to happen. And sir, if someday like मैं नहीं रिकॉर्ड लाइव नहीं देख पाती थी तो मैं रिकॉर्डेड वीडियोस फॉलो करती थी। और सर बस मैंने वही प्रॉपरली उसको फॉलो किया अच्छे से, और मैंने जीटीज वगैरह दिए जो भी लाइंड अप होते थे। तो आई सॉ क्लास के दौरान आप नोट्स बनाते थे या आप रेडीमेड यूज करते थे, कि कैसे करते थे? नहीं सर, मैं खुद के नोट्स आई यूज टू एनोटेट देम, और या फिर नहीं तो मैं हैंड रिटन नोट्स आई आई प्रेफर्ड वही करती थी। वो सो बहुत ज्यादा बेस हेल्पफुल होता है सर। तो जैसे आपका आप सॉरी तो आपका मेन प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी थी जो लाइव मिशन एफएमजी 200 थी, उसके जो सब्जेक्ट वाइज फैकल्टीज पढ़ाते थे उनके वीडियोस आप अटेंड करते थे, उनके नोट्स पढ़ते थे, और यस उसके बाद क्यू बैंक जीटी वगैरह देते थे? यस सर। सर क्योंकि हम लोग को एक आउटव्यू मिल जाता है ना पहले, तो अगर कोई कुछ किसी सोर्स को फॉलो नहीं कर रहा है, सो मेनी ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं दे थिंक कि वो सोर्स ही डिसाइड नहीं कर पाते, एंड हाँ इफ जी। दे डिसाइड वंस द सोर्स देन दे डाउट दैट सोर्स कि राइट। इज दैट इनफ और नॉट। सो आई first of all in my mind I cleared this thing that whatever I am choosing is enough, एंड राइट। अगर वो इनफ नहीं है तो आई गेट सम पॉइंट्स इन द जीटीज और द क्वेश्चंस व्हिच आई सॉल्व, तो वो प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। और सर जैसे अपूर्व सर भी बोलते हैं जो आया है वो हमेशा आएगा, जब तुम्हें ये समझ आएगा तो तुम्हारा नंबर आएगा। तो वैसा ही है कि आई यूज टू रिलाई कंप्लीटली ऑन सेरेबेलम, और बहुत अच्छा शेड्यूल भी बना के दे रखा था, तो हमको ऐसा भी था कि ठीक है जो भी सब्जेक्ट्स जितने भी उनको दिन रिक्वायर्ड है उतने मिल रखे हैं तो वी कैन स्टडी फ्रॉम तो दैट। तो आप फोमो की वजह से 10 जगह नहीं दौड़ लगाए? नहीं 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 यू सर, यू यू मुझे स्टक टू लगा, योर गन्स? यस सर, मुझे लगा नहीं कि वहां पे टाइम में, क्योंकि सर मुझे ऐसा था कि आई हैव टू डू इट इन दिस वन गो ओनली, तो या टाइम वेस्ट करके सोर्स चेंज करके कोई मतलब नहीं है। द फैकल्टीज आर ट्रस्टेड फैकल्टीज, ऑब्वियसली दे नो, दे हैव एक्सपीरियंस, सो वी शुड ट्रस्ट देम, वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स इन देम आल्सो। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन नॉर्मली ना स्टूडेंट्स क्या होते हैं, शुरू में एकदम जोश में पढ़ते हैं, बट बाय द टाइम दे रीच द एंड सब क्लटर या केओस, क्या हो रहा है कुछ आइडिया नहीं होती। तो आपने एंड ऑफ द प्रिपरेशन में क्या करा, I लाइक टुवर्ड्स cannot द agree लास्ट more मंथ? to this, sir, because I had friends जो मतलब they were very good in their preparation, but they end up having marks between 140 and 150, and I feel so bad for them because या at the end they lost hope, और उनको था कि अब नहीं हो पाएगा। So that time I would say कि marathon helped a lot, exceptionally ओके commendable as I ओके said, sir, because ओके sir that time you have to just go through what is very much important, एंड ये राइट। तो आएगा ही आएगा टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि उसमें वो पीवाईटीज ऐसे रिवाइज हो जाते हैं ना मैराथन में। तो आई वुड से कि दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड ऑल्सो आई डिड फ्यू क्वेश्चंस आई यूज्ड टू, जिसका भी जैसे सर आई वुड ऑल्सो से दैट मैराथन हेल्प मी इन वन वे दैट एक सब्जेक्ट था जैसे फिजियोलॉजी, आई वाज नॉट एबल टू कवर इट फ्रॉम द लाइव क्लासेस बिकॉज आई हैड सम इश्यूज, तो सर आई डिड इट फ्रॉम मैराथन ट्वाइस और थ्राइस, एंड आई डोंट फील कि वहां पे कुछ भी लैक हुआ होगा या कुछ भी, राइट। जो जब भी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस करे तो मुझसे सारे क्वेश्चंस हो पा रहे थे, तो आई वाज लाइक कि नहीं, इट इज गुड इफ समवन हैज missed something so they can follow that. Also sir, of your marathon also sir, you completely, you did everything, you taught us everything in those in that one day which we studied together in 6 days, so sir that was very helpful. Uh, do you feel students, like even you included, during the preparation, you lose your calm, anxiety बहुत बढ़ जाती है as the days go by, and does that affect your performance? And if so, how do you take care of it? Sir, I completely agree to this point because, sir, I was also waiting for you to ask this question. Because, sir, I was the one who maintained my calm till 16th of January, and in the last 3 or 4 days, I don't know what happened to me, but I lost it, and I believe that I could have scored more if Yeah. I was in my calmness or in my very good situation at that time. So I would say that yeah, maintaining calm is very important because there is this continuous pressure on you. Yeah. People, they expect a lot from you.
also your parents are there, your friends are there, and they are like कि हो जाएगा, कर लेगी, सब हो जाएगा, and then that pressure is also there. And when you Yeah. give GTs, then you see कि नहीं बहुत बच्चे कर रहे हैं, हमारा तो नहीं हो रहा है. Then you have this feeling of comparison कि नहीं यार इतने सारे लोग हैं और नहीं हो पाएगा सब कुछ. तो वो self doubt तो सर बहुत ज्यादा ही आता है. Every day, every hour after you study, every hour of you after you give the exam, that comes in. But that time you have to just calm yourself and you have to say that ठीक है, करते चलते हैं, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा. तो that is what I believe. I am so sure so many students can relate to what you are saying. They must Yes. have gone through it. जिन्होंने एग्जाम दिए और जिनकी एग्जाम देनी है, they would also feel the same. So very golden words from Dr. Yashbala, that you have to keep your calm and Yes. you have to tell yourself हो जाएगा, or you have to say all is well. कुछ तो करना है, Exactly. लेकिन अपने आप को काम रखना है. Yeah, सर वरना क्योंकि ऐसा होता है ना कि सॉरी सर. नहीं नहीं, आप you go ahead. या सर क्योंकि ऐसा होता है ना कि द टाइम विच वी वेस्ट इन थिंकिंग दैट नहीं होगा, और जो प्रेशर हम लोग उस टाइम पे ले लेते हैं ना, अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं. काफी बच्चे मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे दैट दे यूज्ड टू गेट दैट एंजाइटी अटैक्स कि नहीं होगा करके अपनी तबीयत खराब कर ली, सब कुछ कर लिया. तो Yeah. दैट टाइम वी कैन यूटिलाइज इन स्टडिंग. तो Yeah. ऐसा होता है कि माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स ऑल्सो यूज्ड टू से तू बस करती जा, बाकी सब देख लेंगे, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा, तू अपना अपना काम कर, तू अपनी पढ़ाई कर. See, so many people have come together to Yes, help you sir. in your journey. है ना? Obviously, sir, that I cannot thank enough. My Yeah. friends, family, teachers, everyone. Okay, so that was your preparation phase. Now, a few things that you feel were that you kept in mind, or maybe you got wrong when you actually gave the exam. जैसे exam performance तो जरूरी है ही, तो क्या लोग गलतियां करते हैं एग्जाम के दिन जो आपको Sir, बताना चाहिए? एग्जाम के दिन सर आई वुड से दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सर दिस टाइम आई वाज एबल टू गेट अ गुड स्लीप. दैट वाज वेरी हेल्पफुल क्योंकि सर बहुत जरूरी होती है सच में. बट Yeah, of पीपल course. एंजाइटी के चक्कर में दे डोंट इवन स्लीप, एंड देन बहुत टेंशन में दे डू सिली मिस्टेक्स. Right. बट ग्लैड मतलब थैंकफुली आई एम ग्लैड दैट वो मेरे केस में नहीं हुआ. बट या द थिंग विच आई डिड रॉन्ग इन द एग्जाम वाज दैट आई डाउटेड माई इंस्टिंक्ट दैट नो वन शुड डू. Until and unless you are very sure that you have to change the answer, please don't change it. What comes first to your mind is the correct answer. I actually thought कि नहीं ये मैं अपना अलग दिमाग चला रही हूँ, शायद ये आंसर नहीं हो सकता, कुछ और ही होगा आंसर. बट एक्चुअली आंसर वही था. तो आई marked 2-3 questions which I changed, which I was not supposed to change. So that So again, it's the same thing. Self doubt जितना कम करेंगे उतना better है. Exactly, sir. Even in the exam, you say that self doubt मत करो, instinct को follow करो. Yes, sir. More often than not, आपका सही हो जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. We should not change. अच्छा. So for students, just tell me a few things that are likely to go wrong in their preparation. Maybe top 3 things जो शायद आपने सही करी हो या शायद आपने गलत करी हो, जो आप retrospectively आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था. कोई 2-3 चीजें बताइए जो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे जो अभी प्रिपरेशन करेंगे. Sir, first of all, I would say कि don't doubt yourself and just keep studying. And the more you revise is the more you will get the marks. You have to revise it. Revision is the key, sir. Okay. And sir, one more thing is that, sir, I didn't used to solve questions because I used to think कि नहीं मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व के अंदर दैट वी शुड नॉट फॉलो. हमको क्वेश्चंस करने चाहिए, कोई नहीं बैठा वहां पे देखने के लिए कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे. तो इट्स लाइक यू शुड बी वन अमंग्स द क्राउड जो बस अपना अपना देख रहा है और अपना करता जा रहा है. बस खुद के प्रीवियस सेल्फ से आपको बेटर होना है. तो यू शुड गिव जीटीज, यू शुड सॉल्व क्वेश्चंस, यू शुड रिवाइज, यू शुड नॉट डाउट योरसेल्फ. दीज आर द थिंग्स आई वुड से. And you should maintain your calm. Wonderful. So I would say in a summary, आपने कहा है सबसे important, don't doubt yourself. Yes. अपने आप पे भरोसा रखो. Yes. रिविजन ज्यादा करो. Yeah. और MCQs प्रैक्टिस ज्यादा करो, क्यू बैंक जीटीज वगैरह. तो ये तो मेरे ख्याल से एकदम ही गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस है. डू यू फील स्टूडेंट्स टेंड टू कवर टू मच थिंकिंग कि ये भी जरूरी है, whereas it should be more focused. Yes, sir. कम पढ़ो लेकिन बार पढ़ो, something like that. सर डेफिनेटली सर, क्योंकि सर कुछ टॉपिक्स तो जो बाहर से आएंगे सर वो तो आप कितना भी कवर कर लो वो शायद आपको नहीं आएंगे, क्योंकि वो उस 20% पे फोकस करने से अच्छा है कि आप अपना 80% इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लो, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा. और आपका वो 20% भी सही हो सकता है इफ यू हैव गुड यू नो इन योर 80%. या तो वो एक्सक्लूसिव वो जो रूल आउट कर वाला मेथड वाला होता है उससे भी यू कैन डू दैट 20%.
तो Yeah. सर आई वुड डेफिनेटली से, क्योंकि सर माय फ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू कॉल मी एंड दे यूज्ड टू से सम वेरी डिफरेंट टॉपिक व्हिच वाज नॉट इवन अ पीवाईटी, एंड दे यूज्ड टू से ये पढ़ा के, एंड आई वाज लाइक ये तुम लोग कहाँ से लेके आ रहे हो? तो वही मुझे नहीं समझ में आता था कि ये क्यों पढ़ रहे हैं लोग, ये तो हम्म, क्वेश्चंस में देखा भी नहीं है मैंने। और बट या पूरा एमबीबीएस में इतने सारे सब्जेक्ट है, इतना एग्जैक्टली सारा सर। पोर्शन है, वो तो इम्पॉसिबल है सब कुछ करना। लाइक बिल्कुल सर। मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूँ कि इवन इफ आई अपीयर फॉर द एग्जाम, और अगर हम्म सर्जरी के 35 क्वेश्चंस है तो मुझे हम्म भी 35 सही नहीं आने हैं, हम्म मैं भी 30 या 32 ही सही कर पाऊंगा। सो योर एम शुड बी कि इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको 80% सही लाने हैं, हम्म। लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए, इज व्हाट आई आल्सो बिलीव। बट द थिंग इज, जब मैं ये बोलता हूँ कोई सुनता नहीं है। नहीं सर, ये शायद आपने आप बहुत सही बोलोगे बात तो, बोली, या क्योंकि शायद आप मैंने भी बोलोगे जब, तो उनको। यस सर सॉरी सर, क्योंकि ऐसा था ना कि जब मैं भी क्वेश्चंस करती थी ना, तो आई वाज लाइक कि अगर मैं पीवाई क्यूज भी कर रही हूँ या मैं पीवाई टीज के भी कस्टम मॉड्यूल बना के कर रही हूँ, तो आई वाज लाइक कि 80% सही हो जाए तो ठीक है, डोंट रन बिहाइंड कि यार ये 20% मुझे क्यों नहीं आया, ये मुझे आ जाता था तो फिर और भी ऐसा होता, तो उस टाइम डिप्रेशन में आने का कोई सेंस नहीं बनता है। इफ यू आर डन विद सर, एज यू सेड इन द क्लासेस कि ये So, करो, 25 तक तुम मार्क्स ले आओ, वो बहुत है। मैंने आपको नेक्स्ट डे भी मैसेज किया था कि सर मेरे इतने हैं, तो आपने बोला था कि बस और क्या चाहिए। बस और क्या चाहिए। और यस ये सर। बड़े बड़े सब्जेक्ट्स की बेस्ट चीज ये है कि अगर आपने उनमें अच्छे मार्क्स ले आए तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स का बर्डन कम हो जाता है, देन इट बिकम्स बिल्कुल सर, डिफिकल्ट टू बिल्कुल। क्रॉस द हम्म। 150 स्कोर मार्क। अगर आपको, यस सर। जैसे मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर्जरी में 35 में से हमें 28-29 क्वेश्चन सही आ गए, हम्म आधी हम्म। बैटल तो आपकी वही खत्म हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सच या में, पीएसएम हो गया, सर्जरी हो गया, ओबीजीवाई मेडिसिन, या तो या ऑब्वियसली। बढ़िया। सो जस्ट लास्ट थिंग आई वुड वांट टू आस्क यू, आपके आगे के क्या प्लान्स है? क्या आपके एस्पिरेशन है? नीट पीजी देंगे, आईएनआईसीटी देंगे? और जस्ट रफली आपका क्या आगे के प्रोस्पेक्ट्स हैं? सर आई वांट टू बी अ पीडियाट्रिशियन, और सर या फिर मेडिसिन भी मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, फैसिनेट करता है फील्ड। बट सर या माय इमीडिएट प्लान्स आर टू स्टडी फॉर नीट पीजी एंड we'll see sir. बढ़िया। Baki yeah, whatever exams are lined up, I'll give them all, like बढ़िया। UPSC, CMS hai, and every other exams. Because that will sharpen my preparation only. So yeah, that'll I'll do. So thank you so much, Dr. Yashbala. I am Thank you sure so a much. lot of students who will be preparing now will be able to, relate to the things that you have said. And if they don't trust me, at least hearing from a student herself, उनको थोड़ा trust factor बढ़ जाएगा कि हाँ ये चीजें follow करनी है. And definitely जो आपने advice दी, I'm sure it will benefit so many of them who are going to listen. So thank you so much for your Thank valuable you, sir. time. Sir, All the best. yes, sir. So in the And last, I would say, please don't doubt your teachers and don't doubt your source. that is a wonderful thing to say. And we at Team Cerebellum are all super proud of you and congratulations.